Hello everyone, this is Tanisha Gupta, your friend. So I'm back with yet another video, part 2 of cell injury, etiology and pathogenesis. So guys, please check out part 1 if you haven't already, because I have covered many things that will help you understand this part better. So let's start. In this part we'll discuss irreversible cell injury. So firstly, we need to understand what is physical irreversible cell injury. तो इसमें क्या होता है? In part 1 we discussed about reversible cell injury. तो उसमें क्या होता है? The hypoxia and ischemia occurs for short duration. So in irreversible cell injury, there is persistence of ischemia and hypoxia. So ischemia is interruption of blood supply and hypoxia is low oxygen content, as I've already told you. I've already discussed this in part 1. So it causes irreversible damage to the structure. So whatever damage is happening, whether it be damage to ultrastructure, biochemical, metabolic, mitochondrial, तो जो भी damage होता है, it is reversed in reversible cell injury, but it is irreversible in irreversible cell injury. तो all these damage it causes, it ultimately leads to cell death. So इसमें हो क्या रहा है? First, reversible cell injuries occurring due to hypoxia and ischemia, and hypoxia and ischemia अगर ज़्यादा time के लिए persist कर रहे हैं, it leads to irreversible cell injury. That means first reversible cell injury is happening, and that injury will ultimately lead to irreversible cell injury if hypoxia and ischemia it is happening for a longer time. So, two essential phenomena that distinguish between RCI and IRCI. RCI is reversible cell injury and IRCI is irreversible cell injury. तो हम इन दोनों में distinguish कैसे करेंगे? So, we'll distinguish by there are 2 points. Firstly, inability of cell to reverse mitochondrial dysfunction. I have already told you in part 1 कि reversible cell injury में dysfunction कैसा होता है. तो I'll just give you a quick recap जिन्होंने नहीं देखा है, and guys I suggest do please check it out. तो इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन डैमेज होता है एंड दैट विल कॉज फेलियर ऑफ कैल्शियम पम्प. तो कैल्शियम एक्सेस ऑफ कैल्शियम होता है वो सेल के अंदर आ जाता है एंड सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया की वो स्वेलिंग कॉज करता है एंड ऑल्सो डिपोजिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड रिच एमोफस डेंसिटीज. ऐसे ही कॉज करता है रिवर्सिबल सेल इंजरी में. इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कैसे करते हैं? आई जस्ट डिस्कस इट. तो इसमें इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी ये रिवर्स नहीं हो पाता है, तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो एंड ऑल्सो देयर इज डिस्टर्बेंस इन सेल मेम्ब्रेन फंक्शन इन जनरल, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जैसे डैमेज होता है, जो पंप्स को डैमेज होता है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम पंप को, दैट इज रिवर्सिबल इन रिवर्सिबल सेल इंजरी. एंड ये सब चीज़ें, ये जो डिस्टर्बेंस होती है, ये नहीं ठीक हो पाता है इन रिवर्सिबल सेल इंजरी, तो ऐसे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. I'll just discuss it in detail. तो हम 5 पॉइंट में पढ़ेंगे मैकेनिज्म जो हो रहा है, 5 चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूट करती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी. सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम इन्फ्लक्स की, जिसकी हमने भी बात की. कैल्शियम इन्फ्लक्स इट विल कॉज माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज. अब वो डैमेज कैसे कॉज करेगा? आई जस्ट टेल यू. तो कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है सेल में. तो मान लेते हैं दिस इज अ सेल एंड दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया. और ये कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है. मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया है ये कैल्शियम इन्फ्लक्स क्यों एंड कैसे हो रहा है, सो प्लीज़ चेक इट आउट. तो ये कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा तो ये सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा. इट विल जस्ट move into mitochondria. So in what happens in irreversible cell injury, there is swelling plus deposits of amorphous calcium salt plus formation of vacuoles in mitochondria. Reversible cell injury में क्या था? Swelling plus deposition of amorphous densities. Here the densities they are very large. This is mitochondria. The densities they are very large, plus the new thing is there is formation of vacuoles. These are vacuoles.
vacuoles, large vacuoles. So this is what happens in irreversible cell injury. So calcium influx is happening. It is getting deposited in mitochondria. These are morphological changes that is happening. So there is a formation of large vacuoles plus deposition of amorphous calcium salts in the mitochondria matrix. So next point we have is activated phospholipases. They cause membrane damage. I'll tell you how. So what happens is जो calcium influx हो रहा था it will indirectly cause the membrane damage. तो ये क्या हो रहा है calcium influx हो रहा है जैसे ही it will the cytosolic calcium influx it will activate these ये कैल्शियम इन्फ्लक्स एक्टिवेट करा रहा है फॉस्फोलाइपेजेस को दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू डिग्रेडिंग मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स एंड ये फॉस्फोलिपिड्स है दे आर पार्ट ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन. तो कैल्शियम इन्फ्लक्स से फॉस्फोलाइपेज एंजाइम जो एक्टिवेट हो रहा है ये ही कंट्रीब्यूट करेगा लिपिड मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन इसके डैमेज को एज दे डिग्रेड फॉस्फोलिपिड. And also there is reduced ATP due to membrane damage हो रहा है कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से. कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो रहा है एंड माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है वो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन नहीं कर पा रहा है एंड मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोडक्शन ऑफ ATP दैट इज एनर्जी प्रोवाइड करना. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. सो इसकी वजह से ATP भी लो होगा एंड ऑल्सो दैट विल कॉज डिक्रीज इन रिप्लेसमेंट सिंथेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन. तो ये ऐसे भी कंट्रीब्यूट करेगा मेम्ब्रेन के डैमेज को. तो आई जस्ट गिव अ क्विक रिकैप. ये कैल्शियम इन्फ्लक्स बढ़ रहा है इससे फॉस्फोलाइपेज का एक्टिवेशन हो रहा है दैट विल डायरेक्टली लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड विच इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो डिक्रीज इन ATP जो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की वजह से होना था दैट विल कॉज डिक्रीज इन रिप्लेसमेंट सिंथेसिस ऑफ द मेम्ब्रेन. सो थर्ड पॉइंट we'll discuss about is intracellular proteases that will cause cytoskeletal damage. So cytoskeletal of cell it consists of microfilament, microtubules and intermediate filaments. So what happens is there is damage of activated intracellular proteases which will contribute to cytoskeletal damage plus there is cell swelling or ये damage of activated intracellular proteases it will cause cytoskeletal damage which will produce irreversible cell membrane injury. So next point we'll discuss about is activated endonucleases which causes nuclear damage. So this nuclear damage it happens in three parts. First is pycnosis. I don't know why this is given this way, but second is karyohexis and third is karyolysis. Firstly, pycnosis में क्या होता है? There is shrinkage of nuclear material. तो ये सब ना normal size से कम size में हो जाते हैं. There is condensation and clumping of nucleus. And second thing that happens is karyohexis. इसमें क्या होता है? इसमें small fragments में ये जो nucleus होता है ना ये break हो जाता है. And in what happens is in karyolysis is इसमें होता है डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस. ये डिजॉल्व हो जाता है. मतलब लाइक कैरियोहेक्सिस में छोटे पार्ट्स होते हैं तो कैरियोलाइसिस में उससे भी छोटे पार्ट्स हो जाते हैं दैट इट सीम्स लाइक द न्यूक्लियस इज फेडिंग. तो ऐसा लगता है कि वो डिजॉल्व हो रहा है. सो पिक्नोसिस में श्रिंकेज होती है. कैरियोहेक्सिस में
फ्रेगमेंट्स होते हैं. And in karyolysis there is fading. So this is what happens due to activated endonuclease. So last point we have is lysosomal hydrolytic enzymes. तो इसमें क्या होता है, lysosomal damage होता है, cell death होती है, and phagocytosis होता है. This is a bit complicated. I'll just explain it to you. तो lysosomal membrane होता है, they are damaged. तो lysosomal membrane damage हो गया, it will lead to escape of, तो जो ये lysosomal hydrolytic enzymes होते हैं ये सारे escape कर जाएंगे. And they will cause, these hydrolytic enzymes, they will cause, one second. So these hydrolytic enzymes, they bring out the enzymatic digestion of cellular components which ultimately lead to death. और ये activate कैसे होते हैं? They are activated by, लाइक फर्स्ट लाइजोसोमल मेम्ब्रेन तो डैमेज हो गई एंड ये एंजाइम्स भी रिलीज हो गए. तो ये एक्टिवेटेड होते, एक्टिवेट ऐसे नहीं होते, दे आर एक्टिवेटेड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन प्लस एसिडिक पीएच. In last part I have already discussed about lactic acidosis and how the pH is acidic. The O2 is less due to hypoxia. तो इसमें क्या होता है, the lysosomal damage it happens and also it causes escape of the enzymes which are activated by less O2 and acidic pH. So what happens is the lysosomal damage that happens, so ये जो enzyme होते हैं they will lead to enzymatic digestion of cellular components which ultimately leads to cell death. So I'll just explain it again. तो ये lysosomal membrane damage हो रहा है which is leading to escape of lysosomal hydrolytic enzymes which are activated by less O2 and acidic pH, and also ये enzymes होते हैं they bring about the digestion of cellular component which ultimately leads to cell death, that is phagocytosis. So guys, I hope you like this video. I'll just give a quick recap कि हमने क्या पढ़ा. We discussed about 5 points. We discussed about calcium influx which is causing mitochondrial damage, उसमें densities और vacuums create करके. Second point we talked about activated phospholipases. We talked about उसमें, I'll just show the slides along. So second point we talked about is activated phospholipases and how it causes membrane damage by by calcium influx and less ATP. Then we talked about intracellular proteases and how it causes cytoskeletal damage by cell swelling and decrease in activated intercell proteases. तो fourth point we discussed was activated endonuclease, जिससे nuclear damage हो रहा है. 3 points we discussed pycnosis, karyohexis and karyolysis. And fifth point, last point we discussed in detail, that was lysosomal hydraulic enzyme and how it is causing cell death. So guys, I hope you like this video. Please subscribe to my channel and also thank you so much for watching, and also share it with your friends. Thank you.